Welcome to this session. Today I will be explaining the topic of projection of solids with clear step and example. Okay. Do you know the definition of solid? Okay, आपको मालूम है solid क्या रहता है? Okay. A solid is a three-dimensional object having length, width, and height. Okay. Example: cube, cylinder, cone, prism, pyramid. Okay, and tetrahedron. Okay. And what is projection? Okay, projection means drawing the shape of a 3D solid on a 2D plane using orthographic principles. Okay, in the screen you can see the solids and their types. In a group A, okay, in a group A contain cylinder and prism, and group B contain cone and pyramid. Okay, so what is the difference between group A and group B? Okay, in group A, solid having top and base of same shape. Okay, in group A, solid having top and base in of सेम शेप. ओके, देखिए यहाँ पे सिलेंडर और प्रिज्म में क्या हैविंग सेम बेस एंड टॉप. ओके, एंड इन ए कोन इन ए ग्रुप बी, okay, solid having base of same shape and just point as a top. Solid having same shape and just a point as a top मीन्स इसको हम बोल सकते हैं एपेक्स नहीं तो वर्टेक्स पॉइंट्स. अभी यहाँ पे क्या है पिरामिड में, तो पिरामिड में क्या रहता है? पिरामिड पिरामिड बेस इज पॉलीगॉन, टॉप इज पॉइंट मीन्स एपेक्स नहीं तो वर्टेक्स पॉइंट. पिरामिड में क्या है? बेस पॉलीगॉन रहता है और टॉप फेस जो रहता है पॉइंट में रहता है. ओके, there are some types of prism. Okay, triangular prism, square prism, pentagonal prism, hexagonal. And in the pyramid there are types: triangular, square, pentagonal, hexagonal, or octagonal. Okay, these are the types of pyramid and cones. Okay, the dimensions pyramid of different solids. Okay, suppose let's take example of square prism. तो prism में क्या रहता है? Prism having same base and top. तो इसको बोलेंगे हम top. This is base. अगेन प्रिज्म में डिफरेंस क्या है? प्रिज्म में जो है ए फेस जो रहता है दैट इज अ रेक्टेंगल. ओके, प्रिज्म हैविंग रेक्टेंगल बेस. यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट. दिस इज अ रेक्टेंगल फेस. दिस वी कॉल longer edge. Okay, this is a longer edge. This is a corner of base. This is a edge of base. Okay, मीन्स क्या है डिफरेंस यहाँ पे? resting, you have to find the resting condition, corner or edge of base. Okay, next is square pyramid. Square pyramid, this again apex point and base is square. वापस edge of base, corner of base, and again this we call slant edge. Okay, इसको slant edge बोलते नहीं तो हम लोग inclined edge. Okay, inclined edge बोलेंगे. Again base. यानी सिलेंडर और कोन में हम इसको बोलते हैं, सिलेंडर में क्या रहता है? वापस बेस एंड टॉप सेम रहता है लेकिन सर्कुलर बेस रहता है और सर्कुलर टॉप. और कोन में क्या है? टॉप फेस में एपेक्स नहीं तो पॉइंट बोल सकते हैं, वर्टेक्स पॉइंट, एंड बेस में रहते हैं सर्कल. ओके, और इसको जॉइनिंग जो करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी लाइंस. इसको बोलते हैं हम जनरेटर्स. ओके, जनरेटर्स. with the generators we are joining the top face and bottom face. Again यहाँ पे देखिए there are section of solids, टॉप एंड बेस नॉट पैरेलल. टॉप एंड बेस में कट किया ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, टॉप एंड बेस इसका पैरेलल नहीं है. वापस से फर्स्ट टर्म है ऑफ कोन एंड पिरामिड्स. ओके, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स. देखो प्रोजेक्शन सॉलिड्स में क्या है? फर्स्ट इज सिलेंडर. सिलेंडर बेस एंड टॉप होता है. आपको नोटेशन देते समय क्या देना? यू टू गिव द नोटेशन A,1, B,2. Okay, you have to divide this object in 8 parts. Okay, 8 segments. Okay, तो क्या करना है? फर्स्ट p टाइप कमांड एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद टाइप इन कमांड डिवाइड. यू हैव टू डिवाइड दिस सर्कल इन 8 पॉइंट्स. ओके, तो सिलेंडर तो इसका क्या करेगा? फ्रंट, इसका क्या रहेगा? फ्रंट टू रेक्टेंगल रहेगा. अगेन प्रिज्म में वापस इसका बेस जो है पॉलीगॉन रहेगा और इसका फ्रंट टू रहेगा वो रेक्टेंगल. अगर पिरामिड में क्या रहेगा? इसका फ्रंट टू रहेगा ट्रायंगुलर शेप और बेस इज पॉलीगॉनल पिरामिड.
ओके। अगेन कोन में क्या रहेगा, इसका बेस ट्रायंगल रहेगा और बेस इज सिलेंड्रिकल और सर्कल. Okay, means in this way you have to give the notations. Let's see the resting conditions. Suppose object is resting on base or side or slant face or corner or slant edge. तो आपको क्या करना है, यू टू पुट ऑब्जेक्ट एट द राइट साइड. ओके, इस राइट साइड के ऊपर आपको प्लेस करना है, सी टू बेस के ऊपर आपको प्लेस करना है. मीन्स योर ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन एज. एज मीन्स क्या रहता है, ऑन टू पॉइंट्स, रेस्टिंग ऑन टू पॉइंट्स. ओके, कॉर्नर मीन्स रेस्टिंग ऑन वन पॉइंट. ओके, यहाँ पे देखो सी पॉइंट है तो कॉर्नर मीन्स इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, इट इज रेस्टिंग ऑन एज. आपको राइट साइड के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखना है. सपोज दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म, दिस इज स्क्वायर प्रिज्म, अगेन रेस्टिंग ऑन DC at the right side, okay, edge. This is resting on corner on the C point. Okay, you have to place the object on the right side. This suppose this pentagon, okay, this is resting on DC means resting on the edge, and this is resting on the corner. Suppose hexagon, this is resting on the edge, this is resting on the corner on C point. Okay, okay. This is a square prism. It is resting on the corner. Prism resting on the corner means on the D point. Okay, prism resting on the edge means on the D and C point, C and D point. Okay, in this way you have to draw the object depending on the resting condition. This is resting condition on the corner, this is resting on the edge. Let's take an example. Okay, suppose this is a triangular prism. Hmm? This is a triangular prism, 30 mm side of base, 60 mm long rest, and one of its shorter edge on HP. तो क्या बोला उन्होंने, shorter edge means this shorter edge is on HP and base is inclined 30 degree to HP. Base means inclined 30 degree to HP यहाँ पे दिया. Okay, and the edge of the prism is rest on 60 degree to VP. Edge of the base means edge of the base prism is inclined 60 degree to VP. Draw the projections. First, what you have to do, you have to draw this triangular object with the help of this polygon command. Then you have to draw this, and this is your true shape. Resting condition. This is a true shape. This is a true shape of solid. Okay, this is a true shape of solid. If you know how to draw the planes, most similar way we convert techniques into solids. हमने plane में क्या देखा था? First we have to draw true shape, then we have to draw the uh, true length of the object. उसके बाद true length को हम क्या करते हैं? Copy paste rotate. Same logic you have to use here. Okay? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, for third object copy paste rotate second object with HP. With HP means you have to take angle with HP. Second angle क्या लेना है आपको? HP. Means you have to use logic HP VP. Okay? वापिस इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिल्टेड सॉलिड. इसको क्या बोलेंगे हम? टिल्टेड सॉलिड मींस सरफेस इंक्लिनेशन वी आर डूइंग हियर, सरफेस इंक्लिनेशन. वापिस फॉर फोर्थ ऑब्जेक्ट यू हैव टू ड्रॉ वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइंस फ्रॉम थर्ड ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइंस फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट. दिस इज योर टॉप व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अगेन क्या करना है, फॉर फिफ्थ ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट रोटेट फोर्थ. मींस फोर्थ ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अगेन राइट कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पे पेस्ट करने के एंगल कौन से लेंगे अभी आप? VP के साथ. इसको करें टिल्टेड टॉप व्यू, नहीं तो रीड्रॉ ऑफ टॉप व्यू. उसके बाद फॉर फाइनल ऑब्जेक्ट फाइनल फ्रंट व्यू. फाइनल फ्रंट व्यू क्या करेंगे हम? फॉर सिक्स ऑब्जेक्ट ड्रॉ वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइंस फ्रॉम फिफ्थ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम थर्ड object. Okay, means you have to draw the, you have to join all the points. Suppose this is my A dash A, B dash B, C dash C. In this way you have to join all the points. Okay, so this is my own logic. Suppose my object is resting on HP, so I am going to use HP repeat this logic. So first you have to start like this, zigzag line. This is your first, second, third, fourth, 5, 6. You have to go to the 5 series or S shape. आपको ऐसे zigzag फॉलो करना है. सपोज योर ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन एच में, दिस ट्रू शेप. यहाँ पर रहेगा आपका ट्रू शेप ऑफ सॉलिड. ओके, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड. कंट्रोल C, कंट्रोल V. लेकिन रेस्टिंग कंडीशन क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन HP में. फिर HP में रेस्टिंग है तो आपको यू हैव टू यूज दिस लॉजिक HP VP. ऑब्जेक्ट आपको ट्रू शेप ड्रॉ करना है. इसके बाद इसका ट्रू शेप सॉलिड मीन्स उसके बाद क्या करेंगे आप? सेकंड ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट रोटेट थर्ड ऑब्जेक्ट. उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्ट यू टू ड्रॉ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन लाइन फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट. वापस फोर्थ ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट रोटेट करना है. और फाइनल ऑब्जेक्ट फाइनल वन टू को अगेन यू टू ड्रॉ
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम फिफ्थ एंड थर्ड ऑब्जेक्ट. सपोज आपका ऑब्जेक्ट VP में, तो you have to use this logic. Okay, above XY means vertical plane, below XY means horizontal plane. Okay, so I am going to use this logic VP VP HV. So this is your first true shape, then you have to draw true shape of solid. Okay, then again you have to use the same logic that you have used in the planes. Okay, now this is the solution. Okay, in this way you have to follow the series. Okay, you have to place the object like this. Suppose this is resting on condition on the edge, this is resting condition on the corner. Okay, thanks.